Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to solve the exercise of the chapter Reaching for the Moon. So let's get started. Our first question is, who were the first Indian scientists to explore space? हमारे पहले इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोर किया था? So answer is Vikram Sarabhai and Homi Bhabha were the first Indian scientists who work on a space program. Next question. Why cannot sound be heard on the moon? चंद्रमा पर जो आवाज़ है, साउंड है, क्यों नहीं सुनाई दे सकती है? So answer is sound cannot be heard on the moon because it has a very thin atmosphere, which is almost a vacuum, and sound waves need a medium like air or water to travel. Next question. When does India plan to send humans into space? Answer is India plans to send humans into space by December 2021. The spacecraft will be called Gaganyaan. ये एक्चुअली पास्ट का एक क्वेश्चन हो गया है, अभी रेलिवेंट नहीं है ये क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 2021 ऑलरेडी निकल चुका है, बट क्योंकि चैप्टर में था इसलिए मैंने आंसर कर दिया है. तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोजेक्ट वॉज राकेश शर्मा एसोसिएटेड विद? किस प्रोजेक्ट से राकेश शर्मा एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे या एसोसिएट थे? ठीक है, तो आंसर इज राकेश शर्मा वॉज एसोसिएटेड विद जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द सोवियत Intercosmos space program. Now let's solve the comprehension of this chapter. Read these lines and answer the questions. इस लाइन के बिहाफ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं which we have to solve. So let's read the line first. I had read that the moon has a very thin atmosphere. मैंने पढ़ा है कि चंद्रमा पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा पतला है. तो इसके बिहाफ पे 3 क्वेश्चन है. Who said these words? किसने कहा था ये लाइन? चैप्टर में हमें याद है कि किरण said these words. किरण ने लाइन्स कही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. How thin is the moon's atmosphere? कितना पतला है चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर, कितना ज़्यादा थिन है? So answer is the moon's atmosphere is so thin that it is almost a vacuum. ये मून का जो एटमॉस्फेयर है इतना पतला है कि बिल्कुल लगभग वैक्यूम है, यानी कि बिल्कुल शून्य है एक तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर? क्या होता है इस एटमॉस्फेयर के पतला होने की वजह से? सो आंसर इज द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून बिकॉज ऑफ इट्स थिन एटमॉस्फेयर एंड नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून. एक तो हमें जो एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला होने की वजह से चंद्रमा से जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है. दूसरा, वहाँ पर हम कोई आवाज़ नहीं सुन पाते हैं. लेट्स रीड द अनदर लाइन. हैज़ इंडिया सेंड एनी ह्यूमन्स इनटू स्पेस येट? क्या इंडिया ने अभी तक स्पेस में किसी ह्यूमन को भेजा है? इसके बिहाफ पे 3 क्वेश्चन है. हु सेड दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स किसने कहे थे? सो आंसर विल बी जयंत सेड दीज वर्ड्स. ये जो लाइन थी जयंत ने कहा था इस चैप्टर में. हु आंसर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया था? तो आंसर है सारा आंसर दिस क्वेश्चन. सारा ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द पर्सन हु आंसर्ड द क्वेश्चन से? तो यहाँ पे सारा की बात हो रही है कि सारा ने क्या आंसर दिया था इस क्वेश्चन का. सो आंसर इज साराज रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वॉज दैट इंडिया प्लान्स टू सेंड ह्यूमन्स इनटू स्पेस बाय December 2021 एंड द स्पेस क्राफ्ट वुड बी कॉल्ड गगनयान. आइए थर्ड लाइन भी पढ़ लेते हैं. इट वॉज टू स्टडी द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून नियर इट्स साउथ पोल. इस लाइन के बिहाफ पे देर आर 3 क्वेश्चन. हु सेड दीज वर्ड्स टू होम? किसने कहा था ये लाइन और किसको? सो आंसर विल बी मिसेस वकील सेड दीज वर्ड्स टू रितेश. जो टीचर थी उन्होंने रितेश से कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इट रेफर टू हेयर? यहाँ पर जो इट वर्ड था इस सेंटेंस में वो किसको रेफर कर रहा है? सो आंसर विल बी इट रेफर्स टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 2. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट विल द स्टडी ऑफ द मून्स साउथ पोल टेल अस? Answer is the goal of Chandrayaan 2 was to study the soil on the surface of the moon near its south pole, because this has not been done till now. The craters there are very cold and everything is frozen. So it is believed that
The fossils found on these craters could help in the study about the early solar system. आइए अब एक्सरसाइज बी भी कर लेते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर द स्टूडेंट्स एक्साइटेड. बच्चे एक्साइटेड क्यों थे? आंसर विल बी the students were excited because Dr. Indra Nair was visiting their school. She had been a part of the team that developed some of the instruments for India's mission to the moon, Chandrayaan 2. The children were curious to learn about India's space program from her. Next question. What is the difference between a space scientist and an astronaut? Answer is the difference between a space scientist and an astronaut is that a space scientist studies about space and builds spacecraft. An astronaut, on the other hand, travels into space in a spacecraft built by a space scientist. Third question. List the fact that the students knew about the moon. Answer. The students knew that on the moon we weigh 1/6 of our weight on the earth, because the gravity of the moon is not as strong as that of the earth. They also knew that the tides in the seas and oceans are caused by the gravity of the moon. They were also aware of the fact that the moon has a very thin atmosphere, close to a vacuum, so the sky appears black on the moon. Fourth question. How does space technology help a country? Answer. A country can forecast the weather conditions with the help of the satellites in space. For instance, we can now predict storms and cyclones much in advance and save people's lives. We can even use space technology to map our land and water resources. It is also used for electronic communication. Question number 5. Who is Rakesh Sharma? Answer. Rakesh Sharma is an astronaut. He was the first Indian to go into space as a part of a joint project between the Indian Air Force and the Soviet Intercosmos Space Program. Last question है. What was the main goal of Chandrayaan 2? Answer. The primary objective of Chandrayaan 2 was to study the soil of the surface of the moon near its south pole. This has not been done yet. Now let's understand the vocabulary of this chapter. Words like cosmic and gravity are also used in non-scientific context. मतलब कॉस्मिक और ग्रेविटी जो है ये वैसे तो साइंटिफिक वर्ड्स हैं बट नॉन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. नोट दैट द वर्ड्स आर यूज्ड हियर इज इन नॉन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट. यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी फॉर हेल्प. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें ये वर्ड्स जो हैं वैसे तो देखने में हमें पता चल रहा है कि ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं बट हमें इसको नॉन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है अभी. ओके. सो फर्स्ट, द डैश एट दीपास होम इज़ ऑलवेज वार्म एंड वेलकमिंग. तो हम यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं? एटमोसफियर. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा एटमोसफियर. नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन फोरकास्ट दैट द साइक्लोन कुड कॉज डैमेज ऑफ कॉस्मिक प्रोपोर्शन. हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा कॉस्मिक. थर्ड, फादर्स एक्सपेरिमेंट्स. थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट. फादर्स एक्सपेरिमेंट्स इन कुकिंग ऑफन रिजल्ट इन इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस डिशेज. फोर्थ, एजुकेशन comes under the orbit of Ministry of Human Resources and Development. फिफ्थ हो जाएगा हमारा, people have not fully understood the gravity of the problem of climate change. लास्ट है हमारा, due to congestion in large cities, many satellite towns are growing around them. In last exercise, we have to write a notice. So, let's read it. Anthril Public School. Notice. 6 July 2021. A talk on space research program has been organized on 5th August 2021, Thursday at 11 a.m. in the auditorium. Dr. Indra Nair, an experienced space scientist who was part of the team that worked on India's mission to the moon, Chandrayaan 2, will be sharing her experiences with the students.
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 and 6 कैन अटेंड द टॉक। अश्मिता कौर, हेड गर्ल, जूनियर विंग। कुछ इस तरीके से आप ये नोटिस लिख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।